हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज दोस्तों मैं आपको लीगल फ्रेजेस कुछ देने जा रहा हूं। लीगल फ्रेजेस जैसे दोस्तों, इन दिस कनेक्शन it may be pertinent to point out in this connection it may be pertinent to point out that the wide power that the wide power powers which are given to this court for doing complete justice complete justice between the parties. देखिए दोस्तों, in this connection it may be pertinent to point out that the wide powers which are given to this court for doing complete justice between the parties. बस दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, you can get a very good benefit when you have to make the practice like that. I am sharing my experience to you. In this connection, it may be pertinent to point out that the wide power which are given to this court for doing complete justice between the parties. Next point दोस्तों, next I am sharing you this is my next point. Can be used by this court can be used by this court for instance in adding parties to the proceedings pending before it or ORR in admitting additional evidence
additional evidence or in remanding the case, or in remanding the case, देखो दोस्तों, फुल स्टॉप। क्या करते हैं? कैन बी यूज्ड बाय दिस कोर्ट, कैन बी यूज्ड बाय दिस कोर्ट, ओके। फॉर इंस्टांस in adding बिंदु, parties, ओके, टू द प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग्स है दोस्तों, बिल्कुल बिलो द लाइन, दिस इज द प्रोसीडिंग्स, पेंडिंग बिफोर इट, पेंडिंग ये दोस्तों, पेंडिंग बिफोर और इट, ओके, और ORR, और इन एडमिटिंग बिंदु, एडमिटिंग एडिशनल दिस वन दोस्तों, एविडेंस, ओके, और इन रिमांडिंग द केस, द और केस यहां बना सकते हो दोस्तों। देन यू कैन टच इट, कैन बी यूज्ड बाय दिस कोर्ट फॉर इंस्टांस एडिंग पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स, ये प्रोसीडिंग है दोस्तों, बिलो द लाइन, पेंडिंग बिफोर इट, और in admitting additional evidence or any remanding the case. Next दोस्तों, this is next, or in allowing a new point or in allowing a new point to be taken for the first time, to be taken for the first time, full stop. It is plain that in exercising these and similar other power, this को other powers, full stop, कोमा है दोस्तों, ठीक है, देखिएगा, और in allowing a new point to be taken for the first time. It is plain that in exercising these and similar other power, this one power, ठीक है दोस्तों, जैसे और in allowing a new point to be taken for the first time, it is plain that in exercising these and similar other power. Next,
power, this court would not be bound, this court would not be bound, would not be bound by the relevant provisions by the relevant provision of procedure if it is satisfied that a departure from the said procedure is necessary to do complete justice between the parties. देखिए दोस्तों, I would like to say this is a very simple matter. You can adopt that this court would not be bound by the relevant provisions of procedure if it is satisfied that a departure from the said procedure is necessary to do complete justice between the parties. Full stop दोस्तों. Very excellency with you. This court would not be bound by the relevant provision of procedure if it is satisfied that a departure from the said procedure is necessary to do complete justice between the parties. तो दोस्तों आपको यू कैन गेट ए वेरी गुड बेनिफिट, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है यदि आप इनका लीगल फ्रेजेज हैं और आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इनको बिल्कुल प्रैक्टिस में डालिएगा दोस्तों. आई एम शेयरिंग यू, आई एम डिवोटिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू एंड यू मेक द प्रैक्टिस. यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए, आप इसको अगर आपको लाइक आए तो आप इसको जो है ना सब्सक्राइब करिएगा और आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो. थैंक यू दोस्तों. बाय, गुड बाय.